Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 65th lecture of this series of CRPC. So in the earlier class we had seen the clause 464 and now let's see clause 2, clause A first again. In a case of an omission of a frame of charge, omission है हमारा charge frame ही नहीं हुआ, order that a charge be framed and that the trial be recommenced from the point immediately after the framing of charge. अब रिकमेंस्ड मतलब क्या? पहले तो ट्रायल हो चुका है हमारा, अब चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज से रिकमेंस द ट्रायल मीन्स फिर से ट्रायल करोगे तो इसमें फ्रेश ट्रायल होगी. रिकमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल मीन्स व्हाट? आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग you start a charge afresh, so that is a fresh trial. You start the trial afresh, that is a fresh trial. And in the clause B they are saying as the courts thinks fit, manner it thinks fit. अगर कोर्ट को लगता है इधर को ओमिशन करने के बाद, ओमिशन को करेक्ट करने के बाद फिर से पूरा ट्रायल करोगे, देन द कोर्ट विल डू दैट एंटायर ट्रायल अगेन. और लगता है कोर्ट को, अगर ये लगता है कि कुछ विटनेसेस के लिए एग्जामिन कर लो, देन इट विल डू दैट. अगर चार्ज फ्रेमिंग नए सिरे से हुआ है, बिल्कुल चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ है, तब उस स्टेज में चार्ज के बाद पूरा ट्रायल होगा. चार्ज के स्टेज पे, चार्ज के स्टेज पे चार्ज के बाद पूरा ट्रायल होगा, because earlier trial was the without a charge and this trial is upon a charge, so obviously the trial will be conducted upon that charge only. So earlier बारे में, omission वाले में लिखा हुआ है recommence, the trial will be recommenced. Recommence means fresh trial from the date of framing of the charge, फिर से नए सिरे से ट्रायल होगा. So recommenced means new trial from the stage of charge framing. एंड क्लॉज बी में दे हैड रिटन न्यू ट्रायल, बट न्यू ट्रायल के साथ दे हैड रिटन वॉट एवर मैनर इट थिंग्स फिट. न्यू ट्रायल या तो पूरा का पूरा स्टार्ट कर, फ्रेश ट्रायल कर दो डी नोवो, या फिर सम पोर्शन ऑफ द ट्रायल कैन बी डन अगेन. नाउ लेट्स सी सेक्शन 216. सेक्शन 216 इज अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज. अब आपने चार्ज फ्रेम कर लिया, अब बीच में कहीं पे ड्यूरिंग द ट्रायल यू फाइंड दैट द चार्ज इज रॉन्गली फ्रेम्ड. आपने चार्ज फ्रेम कर दिया और बीच में कहीं ड्यूरिंग द ट्रायल यू फाइंड दैट द चार्ज इज रॉन्गली फ्रेम्ड, देन विल यू मेक अ डायरेक्शन टू फ्रेम द चार्ज? और ड्यूरिंग द ट्रायल you get some evidences, during the trial you get some evidences and you believe that in this case you have been one more charge, then will you not add the charge to the trial? So that is what addition or alteration to the charge. Any court may alter or add to any charge at any time before the judgment is pronounced. So any stage before the judgment, alter the charge or add to the charge. अब मान लो अगर पहले आपने चार्ज बनाया था ग्रीवियस हर्ट का, सेक्शन 325 ऑफ IPC, and the court in the trial comes to know the person is dead, will you not frame the charge of 302 also? Now this charge will be added. अगर आपको पता चला था the person has died due to that injury, now the charge of 302 also will also be added. This is what called addition of charge. Alteration of charge is अगर आपको इन द कोर्स ऑफ ट्रायल ये लगा कि ये ग्रीवियस हर्ट का मैटर नहीं है, तो इसमें आपने 325 की जगह 323 कर दिया, सो दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज. अगर आप 302 का ट्रायल कर रहे हैं और आपको लगा कि ये 302 का नहीं 304 का मैटर है, तो आपने उसको हटाकर 304 का ट्रायल स्टार्ट कर दिया. हालांकि इसके लिए बड़े ऑफेंस के लिए, अगर छोटा ऑफेंस कर रहे हो आप, अल्टर कर रहे हो, तो उसके लिए 221 का प्रोविजन है, 221 CRPC का प्रोविजन है, जहाँ पे आप माइनर ऑफेंस के लिए बिना आप चार्ज अल्टर करे कन्विक्ट कर सकते हो. सो इफ यू चेंज दैट सेक्शन नंबर, दैट इज अल्टरेशन, एंड इफ यू ऐड वन मोर सेक्शन, दैट इज एडिशन. एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन shall be read and explained to the accused. Now you must appreciate, charge had already been framed, you read the charge, explain it to the accused, and you took the plea of guilt. Now you are adding one more charge, or you are changing the charge. Now in this new charge also obviously the charge has to be read and explained and plea of guilt has to be taken. जब ओरिजिनली आप प्ली ऑफ गिल्ट लोगे और रीड करके समझाओगे, तो जब बाद में जब चार्ज चेंज किया तो वहां पे भी सेम प्रोसीजर वुड हैपन. If the alteration or addition to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the
case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge. If the alteration or addition to a charge in such that proceedings immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been original charge. So what happened is, earlier there is charge framed for the offense number 1. The trial was going on. Somewhere here, the court, along with the charge number 1, adds the charge number 2 also. Obviously, one thing they can always do, they can stop the proceedings and they will read over and plus explain this charge and plus take the plea of guilt. अब उसके बाद उनको इस चीज को एडजॉर्न करने की जरूरत है और they can continue the trial. So that discretion they have, the discretion the court had, if it finds that the continuance of trial after the plea of guilt, etc., the continuance of the trial not going to prejudice the accused, it will go ahead with the trial without adjournment. But if it finds that the continuance may prejudice the trial, may prejudice the accused, उसको और witnesses की जरूरत पड़ेगी, उसको और तैयारी की जरूरत पड़ेगी. उसी तरह से दूसरी तरफ अगर prosecutor also may get prejudice, now the prosecutor on the new charge used to need some more time to collect some more evidences. In that case, the court will adjourn the proceedings and fix a date as a future date. If the alteration or addition is such that proceedings immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. अब जो वो नया ट्रायल जो आपने लगाया उस पर आप नया ट्रायल शुरू कर दो, जो नया चार्ज लगाया आपने, या फिर दोनों का ट्रायल कैंसिल करके दोनों का फ्रेश ट्रायल शुरू कर दो, और या फिर आप कम से कम एक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूटर को अपना केस उस चार्ज पे तैयार करने के लिए टाइम देने के लिए एक एडजॉर्नमेंट दे दो. The court may allow an adjournment to the case to benefit the accused and the prosecutor, so as that they would unable to prepare their case in the meanwhile time. Because आप नया सेक्शन लेके आए, obviously the prosecution would require to time for preparation for that, और आप जो डिफेंस है वो भी required time for preparing for the defense, and therefore for this new charge the court can always adjourn the proceeding. If the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded. If the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which altered or added charge is founded. अब ये कह रहे हैं कि जो नया चार्ज आपने बनाया है, आपने पढ़ा हुआ है कि सैंक्शन आपको कहाँ पर लेना पड़ेगा, सेक्शन 196 में, 195 में, या फिर 197. नाउ इफ यू हैव now added a charge which required the sanction of government or any other authority, obviously without obtaining the sanction you cannot proceed with the trial. पहले आपको उस चार्ज पे सैंक्शन लेना पड़ेगा, and for sanction you have to adjourn the proceedings. Then only the prosecution would obtain the sanction from the government or from the district magistrate, whatever be the case, and then the trial will be recommenced. हाँ, उसी फैक्ट पे अगर कोई और ऑफेंस बनता हो और उसी फैक्ट के लिए आपने पहले से सैंक्शन ले रखा है, तो इस नए ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Read it again. Any court may alter or add any charge at any stage. Any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced. Alteration means some other section
be put in place of the earlier section. That is the changing of the section. Means that the original section is given up and some other section will be put in its place. And addition means the original section will continue and one more section has been added. If one more section is added, then it is addition. And there can be a combination of alteration and addition. Any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced. Every such alteration or addition shall be read and explained to the accused. लॉजिकल है, जब भी नया चार्ज हो accused के खिलाफ जब भी नया चार्ज बनेगा तो उसको पढ़कर सुनाना होगा, plea of guilt लेना होगा. If alteration or addition to a charge is such that proceedings immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge. If the alteration or addition to a charge is such that a proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, अगर कोर्ट के ओपिनियन में, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case. तो नया चार्ज जो लगाया दोनों पार्टीज को देखना होगा कि इस नए चार्ज प्रोसिक्यूशन को भी अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और डिफेंस भी अपना डिफेंस प्रिपेयर करेगा. अगर आपको लगता है कि इस नए चार्ज पर भी उनके पास मटेरियल ऑलरेडी है, देन गो एड विद द ट्रायल. लेकिन अगर आपको लगता है कि नए चार्ज पर इनके पास मटेरियल नहीं है एंड दे नीड टू कलेक्ट इट एंड दे विल प्रेजुडिस अगेंस्ट, इन दैट केस यू हैव टू एडजॉर्न द प्रोसीडिंग टू एनेबल देम टू कलेक्ट मटेरियल फॉर द केस और फॉर द ऑल्टर्ड चार्ज. So clause 3 basically वैसे ये कह रहा है कि if the alteration or addition to charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely to prejudice the accused in his defense or prosecutor in conduct. अगर वो prejudice नहीं करता है, the court may in discretion, in the opinion of the court may in discretion after alteration or addition has been made, proceed with the trial. proceed कर देगा ट्रायल से, जैसे कि alteration और addition of charge had been original charge, कि ऐसे प्रोसीड करेगा प्रोसीडिंग्स को जैसे जो अल्ट्रेशन और एडिशन जो बाद में हुआ है वो ओरिजिनल चार्ज में ऑलरेडी था. और अगर प्रेजुडिस करता है तो उसके लिए क्लाउज 4 है. If the alteration or addition is such that the proceeding immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. या तो कोर्ट नया ट्रायल ऑर्डर करेगा, तो नया चार्ज है तो स्टार्ट ए ट्रायल फ्रेश. अब मान लो पहले वाला सेक्शन छोड़ दिया आपने और कुछ नया सेक्शन लगा दिया, अल्ट्रेशन कर दिया, वन सेक्शन इज लेफ्ट एंड सम न्यू अदर सेक्शन इज एडेड. सपोज the new section is totally different और उस सेक्शन पे अभी तक ट्रायल हुआ नहीं, तो यू कैन गो फॉर फ्रेश ट्रायल. लेकिन सपोज अब न्यू सेक्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, पहले 323 का लगाया था, अब 325 के लगा दिया. पहले हर्ट का था, अब ग्रीवियस हर्ट कर दिया. अब जो हर्ट पे जो डिफेंस लिया था वही ग्रीवियस हर्ट पे डिफेंस होगा, हर्ट पे जो डिफेंस प्रोड्यूस होगा वही ग्रीवियस हर्ट पे लगेगा, वहाँ पे न्यू ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी. द कोर्ट में नॉट एडजॉर्न द प्रोसीडिंग इन क्लॉज 3 or it may adjourn to enable to collect some more evidence, but a new trial will not be required. So new trial or adjournment that is given in clause 4. If the offense stated in the altered or added charge is one of the prosecution of which the previous sanction is necessary. Here they are talking about 195, 196, 197, etc. The previous sanction from the government is required. If the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary. अब जैसे मान लो एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट ने प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ रॉन्ग किया है, he has committed a wrong in his private capacity, then without any sanction etc. You did not take the consent, you took the cognizance, and trial and inquiry is going on. Now the courts in the proceedings realized that he had done that offense. For example, he had done that offense of conspiracy in his official capacity also. उसने जो प्राइवेट कैपेसिटी में का ऑफेंस किया वो तो है ही है, उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ही है
done the sum offense to related to the same transaction। तो उसमें आप ऑफिशियल कैपेसिटी वाले को ऑफेंस को भी ऐड करो 195 एक्सेट्रा CRPC, बट फॉर दैट purpose you have to obtain the sanction, so the entire trial will be stopped for the consent has to be obtained। और जब तक वो consent नहीं मिलेगा the trial will be stayed and whatever time it would take 2 months 6 months, जब तक कंसर्न नहीं मिलेगा द ट्रायल विल बी स्टेड। लेकिन मान लो आपने किसी ऐसे ऑफेंस का प्रोसीडिंग्स कर रखा है जिसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस ऑफेंस के लिए आपने ऑलरेडी सैंक्शन लिया हुआ है। सपोज देयर इज अ बिगर ऑफेंस कमिटेड इन द ऑफिशियल कैपेसिटी एंड यू ऑलरेडी ऑब्टेन द सैंक्शन। Now in the course of proceedings, the court find that no, the bigger offense is not committed and it converted into a smaller offense and new charge is framed. But the ingredients of the smaller offense are the same as the bigger offense. It is almost the same as the bigger offense. अब उस बड़े ऑफेंस के लिए आप सैंक्शन ले चुके हो तो आपको छोटे वाले ऑफेंस के लिए सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपने चार्ज चेंज किया या नया चार्ज ऐड किया तो एविडेंस भी नए सिरे से होगा। एडजमेंट करोगे दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट जो चार्ज आपने नया ऐड किया या ऑल्टर किया है उन चार्जेस पर ऑन दैट चार्ज ऑन दोज चार्जेस द पार्टी शैल बी अलाउड फॉर गेटिंग सम मोर एविडेंसेस either to call the new witnesses or to re-examine the earlier witnesses for the new charge, so that is provided in section 217। जैसे ही चार्ज ऑल्टर होगा या ऐड होगा तो आपने पहले एविडेंस विटनेसेस को पहले जिन विटनेसेस को एग्जामिन किया था किसी और सेक्शन के लिए उनको आपको नए सेक्शन में एग्जामिन करने के लिए बुलाना पड़ेगा। उस नए वाले चार्ज पे कुछ नए एविडेंसेस हो सकते हैं, एडिशनल एविडेंसेस हो सकते हैं, कुछ और नए विटनेस हो सकते हैं। लेट देम ऑल्सो गेट टू बी समन्ड। शैल नॉट द कोर्ट अलाउ द पार्टीज फॉर दीज थिंग्स, that is given in 217। Whenever a charge is altered or added to by the court, whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed। ट्रायल कमेंसमेंट के बाद ही तो चार्ज ऑल्टर होगा। Whenever a charge is altered or added by the court after the commencement of trial, the prosecutor and the accused shall be allowed to recall, resummon and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court, for reasons to be recorded in writing, considers that the prosecutor or the accused, as the case may be, desires to recall or re-examine such witnesses for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। तो जब भी आप चार्ज ऑल्टर करोगे या नया चार्ज ऐड करोगे, whenever you alter the charge or add a new charge, the prosecution or the defense both will get the right to recall some witnesses already examined and re-examined। So they will get the right to recall some witnesses already examined and re-examined with respect to the new charge, but the court has the discretion, because sometimes if the party is recalling the witnesses only for delaying the proceedings or only for troubling the other party, then the court shall not allow the resummoning. Also to call any further witness whom the court may think to be material। Further witness what? Any new witness। Also to call any new witness whom the court may think to be material। तो आपके पास राइट है या तो आप पुराने विटनेस को दोबारा बुलाकर एग्जामिन कर लो या फिर चाहो तो नए विटनेसेस को भी बुला सकते हो। एंड कोर्ट शैल अलाउ दीज विटनेसेस टू बी एग्जामिन्ड बाय द पार्टी कंसर्न, बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। सो आफ्टर दिस, सिंस वी आर डिस्कसिंग 216 एंड 17, अब 216 में विटनेसेस की बात कर रहे हैं, सॉरी 217 में हम विटनेसेस, रिकॉल ऑफ विटनेसेस की बात कर रहे हैं और 216 में हम एडिशन और अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। हियर इन दिस 319 ऑल्सो रिलेटेड to this additional prosecution। 319 is also related to additional prosecution, so 319 also we will do here itself with this topic। 319 में क्या होता है कि suppose magistrate A take cognizance against the accused and the trial started। अब ट्रायल के बाद क्या होता है, cognizance के बाद इंक्वायरी, ट्रायल एक्सेट्रा would started। somewhere W
appear as a witness जब ट्रायल चालू हो जाती है. And W gave the evidence that he saw A and B committed the offense. अब कॉग्निजेंस सिर्फ A के खिलाफ हुआ, B के खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन विटनेस ने कहा that it was A and B both who had committed the offense. He had seen both committing the offense. अब यहाँ पे देखो, A तो अपने लिए तो क्रॉस एग्जामिन कर लेगा विटनेस को, कह रहा है कि आई सो A to commit the offense. तो ए तो अपने लिए तो क्रॉस एग्जामिन कर लेगा विटनेस को. बट व्हाट अबाउट बी? बी इज नॉट देयर इन द ट्रायल. बी इज नॉट देयर इन द ट्रायल, तो बी कैसे क्रॉस एग्जामिन कर लेगा? बी कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन ए डब्ल्यू एट दिस स्टेज. व्हाट द कोर्ट विल डू इज, कोर्ट विल अप्लाई इट्स own judicial mind whether the testimony given by the W is prima facie sufficient enough to take cognizance against B also. If the court finds yes, then the court will issue notice to B, issue summons or warrant against B and get him produced before itself. And now जब भी वो produce होगा उस दिन से the trial will start against A and B. इस पूरे केस में B was what? B was additionally prosecuted. बिकॉज ओरिजिनल प्रोसिक्यूशन तो ए के खिलाफ था, लेकिन आपने बी को भी एडिशनली जोड़ दिया था. बी को भी आपने एडिशनली केस में जोड़ दिया. दैट इज व्हाट कॉल्ड एडिशनल प्रोसिक्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस appearing before the court. On the basis of the evidences appearing before the court. The court was conducting on the trial only against A. The court is taking evidence only against A, and in those evidences some evidence come in front of the court in which court finds that B was also involved. Then the court would apply its judicial mind. The court would apply its judicial mind. The court may exercise the power of 155 Evidence Act to ask questions. जिस विटनेस ने बी के खिलाफ बयान दिया है, बी तो है नहीं ट्रायल में, अब बी तो क्रॉस एग्जामिन कर नहीं सकता. अब कोर्ट उस बी के पक्का करने के लिए वेदर द बी हैज कमिटेड ऑफेंस और नॉट, कि उसके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट में पुट अप the question under 155 Indian Evidence Act to the witness. Court may put the questions of 155 Indian Evidence Act to the witness. And after that, if the court is satisfied, it may issue process against B also. And now A and B are together in the trial. अब A और B दोनों ट्रायल में होंगे. अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपने B को लेटर स्टेज पर ऐड किया. अब हो सकता है उसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कुछ ऐसा ऑफेंस है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसका खत्म हो चुका हो. देयर द रूल इज दैट द बी विल बी डीम्ड टू हैव बीन एडेड फॉर द डे व्हेन द ओरिजिनल कॉग्निजेंस टेकन, द डे व्हेन द ओरिजिनल कॉग्निजेंस वाज टेकन. द ओरिजिनल कॉग्निजेंस अगेंस्ट ए वाज टेकन. यह माना जाएगा बी को भी उसी दिन ऐड किया गया था. द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. The other issue is that suppose the trial is conducted by the court of session. Suppose मान लो पहले मजिस्ट्रेट ने ए के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया और फिर उसके बाद ए को कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन में, और ट्रायल उस समय कोर्ट ऑफ सेशन में चल रहा था. अब उसको पता चला कि बी इज इन्वॉल्व. देन shall the court of session take the directly cognizance, or shall the court of session ask the magistrate to take cognizance and issue process etc. The answer is the court of session will take it directly. अब जो एविडेंस बी के खिलाफ आया था उसका क्या होगा? अब जब बी को लाओगे आप, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करोगे. यू विल फ्रेम द चार्ज, यू विल रीड ओवर द चार्ज, you will take plea of guilt. All the normal proceedings will take place. The witness who had given evidence against B, now that witness will make appear before the court, and the examination in chief and cross examination will be done in the presence of B. मतलब विटनेस का पहले वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन उसको फिर से कोर्ट में अपियर होकर अपना बयान देना पड़ेगा. और जब भी कोर्ट में वो अपना बयान देगा, उसका पहले वाला जो स्टेटमेंट था जिसमें उसने एक्यूज्ड ए के लिए भी बयान दिया था, सॉरी एक्यूज्ड बी के लिए भी बयान दिया था, जिसमें एक्यूज्ड के लिए ए के लिए आया था और बी के लिए भी बयान दिया था, दैट कुड बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉरोबोरेशन. ब्रॉडली दिस इज in the topic 319. So that's it for today. We will continue 319 in detail in the next lecture. Thank you for watching.